Hello class 7. Today we are going to talk about the next topic, percentage. That's a big chapter in your class, percentage and its application. Today we will talk about it. So percentage. Let's start with the concept. What is a percentage, beta? Percentage. Per means, cent means, page means. Cent होता है बेटा 100 per 100. So percentage is a Latin word जिसका मतलब है per 100. When we represent a number per 100, that is called a percentage, and the symbol of percentage is this dot slash dot. This is a mathematical symbol of percentage. When I write 4 and this sign, this is called 4%. And how to represent 4% per 100 means 4 per 100. So in percentage, you can write down the definition of percentage like percentage means the number with denominator 100. It's a special kind of fraction actually. Fraction you all know, numerator and denominator. But if the denominator become 100 or the units of 100, that becomes the percentage. So percentage means the number per 100. Now in your chapter you will start converting percentage. Convert means change करना. आप परसेंटेज को कैसे चेंज कर सकते हैं? यू कैन कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशो, फ्रैक्शन, डेसिमल and vice versa. Means you can change the percentage into ratio, you can change the percentage into fraction, you can change the percentage into decimal and vice versa means opposite. रेशो को भी हम परसेंटेज बना सकते हैं, फ्रैक्शन को भी परसेंटेज बना सकते हैं, डेसिमल को भी परसेंटेज बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव एन एग्जाम्पल 6%. हाउ कैन आई राइट 6%? मैम ने अभी आपको बताया कि परसेंट का मतलब होता है डिनोमिनेटर 100, नीचे 100 चला जाए, तो 6% कैन बी रिटन लाइक 6/100. अब 6/100 को मैं रेशो में कैसे लिख सकती हूँ? 6/100. And if cutting is possible, I can do the cutting also. 3 to the 6, 50 to the 30. So I can write it 3/50. In this way, I can write down the percentage into ratio. Fraction में मैं कैसे लिख सकती हूँ? 3/50. That is a fraction. Fraction form. What is a fraction? When numerator is there and denominator is there. When any number is written in the P by Q form. P by Q form means एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे. That form is called the fraction. And how can I write the number in decimal? 3/50 means ऊपर का नंबर अंदर and divided by 50. हमेशा नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं. Sorry, it's 3. Now I cannot divide like this. तो मेरा यहाँ लगेगा decimal point and balance करने के लिए 0. When I put the decimal point here, it becomes 30. अब 50 के टेबल में again 30 is not coming. Then one more 0, it becomes 300. 56 था 300. So I can write the percentage 6%. I can write it 0.06. और this is the method, but इसका एक formula भी है. There is a shortcut. अगर मैं लिखूँ 7% तो 0.07. 9% 0.09, 13% 0.13. ओके, बिकॉज डॉट के बाद 2 zeros, तो ऑटोमेटिकली 2 zeros नीचे लग जाएंगे, डिनोमिनेटर 100 बन जाएगा. इन दिस वे यू कैन ईजिली राइट डाउन द परसेंटेज इन टू रेशियो, फ्रैक्शन एंड डेसिमल. थैंक यू. ओके क्लास, now we understood how to change the percentage into ratio, how to change it into decimal and in a fraction form. Now there are some problem sums given like 12/20. See, it's very easy to change 4% into 4/100, right? It's very easy. You know what is a percentage? Percentage means per 100, तो 100 नीचे लगा दो. Now what happened? If I said 12/20 is a fraction, change it into percentage. अब ये change कैसे होगा? 100 is not here. So always remember that you have to make denominator 100. आपको 100 denominator बनाना है, तभी वो percentage बनेगी. So what will I do? I will think about a number which should be multiplied by 20 to get 100.
अब मुझे इसे 100 ही बनाना पड़ेगा बिकॉज परसेंटेज मीन्स पर 100. फॉर दैट आई हैव टू थिंक अबाउट अ नंबर. तो 20 का टेबल, 21 द 20, 22 द 40, 23 द 60, 24 द 80, 25 द 100. It means if I multiply 20 to 5 I get 100. And remember the equivalent ratios. Equivalent में मैंने आपको क्या सिखाया था fractions में? The same number which goes to denominator, the same will go to upper part numerator. So 12 5 the 60. So it becomes 60%. This is the answer. So when any number, any fraction is given to you, when denominator is not 100, try to change it in denominator 100. आपको इसको change करना है. अगर इसकी जगह होता 12 by 200, what happened? 200 is denominator. I want the 100 only. आपको परसेंटेज पे पहुंचने के लिए 100 ही बनाना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. तो what I'll do? I'll divide it by 2. Why? Because I know when I divide 200 by 2 I get 100. The same number will divide it by upper side. जो नीचे होगा वही ऊपर होगा. The same thing. This is divided by this. This gives you 100 and 12 divided by 2 6. So 6% is the answer in this case. So either you can multiply or you can divide to get the percentage. Now this is easily solved. Now this thing is 1 by 3. Now what happened? Here 1 by 3. I cannot find any number to get multiplied with 3 to get 100. अब 3 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ मुझे 100 नहीं मिल रहा है, राइट? तो क्योंकि 33 3 द 99 और उसके बाद भी 100 कहीं नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा कोई भी नंबर when I am getting such kind of fraction where I cannot multiply, I cannot divide to get 100, उसके लिए सिंपल है 1 by 3 multiply 100%. या फिर आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो 1 by 3 multiply 100 by 100. तो ये आ जाएगा 100 by 300 और you can write it 1 by 3 100 by 3 परसेंटेज. ये जो 3 into 100 है ना, ये 100 बन जाएगा आपका परसेंटेज का साइन. तो 100 by 3% is the answer. So in this way you can do the problem sums. Now the next thing is which I want you to understand about the percentages, its usage in day-to-day life. Where do we see the percentage? Beta, in marks we see the percentage. It's very common to give your marks in a percentage form. When I say I have got 84% marks, तो means 100 marks के पेपर में I got 84, तो 84% is my marks. इसी तरह से हम करते हैं. तो marks को denote करने के लिए we usually use the percentage. Okay, how to find out your marks or how to change your marks in the percentage? Let me give you an example. For example, your total marks is 400. You give an exam of 400 marks and you got 320 marks. So how will you change it into percentage? Marks को percentage में कैसे convert किया जाता है? It's very easy. Always remember this small identity or formula. Small number divided by big number or the total number you can say into 100%. Percent means because I am changing it into percent, तो percent sign मैं जरूर साथ में लगाऊंगी. Okay? So suppose in exam of 400 marks you got 320 marks. So इसको आप कैसे लिखोगे? 320 is the small number by big number, that is 400 into 100%. Let's solve it. 2 0 is cut with these 2 0. 4 1 the 4, 8 4 the 32, 0. So 80% is my marks. So this is the formula you have to keep in your mind is to find out the thing in a percentage. Percentage कैसे की काउंट की जाती है? स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय बिग नंबर इंटू 100%. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आई हैव 1500 रुपीज़ इन माई पर्स, आई हैव स्पेंड 450 रुपीज़ आउट ऑफ इट. तो व्हाट इज़ माई परसेंटेज? व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी आई हैव स्पेंड? 1500 रुपीज़ थे मेरे पॉकेट में, जिसमें से मैंने 450 रुपीज़ खर्च कर दिए. तो कितने परसेंट रुपीज़ मैंने खर्च किए? तो व्हाट विल यू डू? द अगेन द सेम फॉर्मूला, स्मॉल नंबर divided by big number into 100%. When will you do the cutting? You will get the answer. So it's easy to find out the percentage of a given quantity or a given number. One more thing I want you to understand is the use of off. When I say what is 25% of rupees 300?
मेरे पास 300 रुपीज़ है, उसका 25% कितना होगा? तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम इन योर एक्सरसाइज सम, हाउ टू सॉल्व इट। ऑफ का मतलब एवरीबडी नोज, रिमेंबर द बोर्ड मास, बी सेज ब्रैकेट, ओ सेज ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो 25% को मैं लिख सकती हूँ 25/100, बिकॉज परसेंटेज मीन्स पर 100, डिनोमिनेटर 100, ऑफ इज मल्टीप्लाई into 300. 300 is a whole number. I'll change it into fraction. I'll do the cutting and I will get the desired result. So two things you have to keep in mind while doing the problem sums, or you can say the story sums. Small number by big number into 100% is one formula, and the second thing is where off comes, जहाँ पे भी off word का use हुआ है, off को it will be converted into multiply and you can simply solve these kind of question. So जितने भी marks वाले question आएंगे, money related questions आएंगे, ऑफ वाले, ऑफ मीन्स द पार्ट ऑफ अ थिंग। जब किसी चीज़ का पार्ट पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अ मैन इज हैविंग 5 लाख रुपीज़ एंड ही हैज़ टू गिव द शेयर ऑफ 1/3 पार्ट ऑफ इट टू हिज सन, तो कितने पैसे वो अपने सन को देने वाला है? तो 1/3 ऑफ 5 लाख। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, सिंपली सॉल्व इट एंड you can get the desired result. So in this way you can solve the percentage sum. I am very sure you have understood all the concept. Thank you and keep learning.